Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we have two very important news articles. First is how India is setting up a national designated authority to basically kickstart carbon markets. And next is how the government is helping tribal villages by training change leaders under the Adi Karam Yogi initiative. All right. So, students, first let's start with this news article and let's talk about climate change. You've heard of it, right? So, what is climate change? Basically, Earth is getting warmer, and because of too much carbon dioxide and other greenhouse gases are there in atmosphere. And where these gases are coming from, we know that it is coming from factories, vehicles, deforestation, and even some farming activities. Now, what happened back in 2015? The world came together and they signed an agreement called the Paris Agreement. Paris Agreement. Okay, so you can think of it like a global pledge where countries, they promised that we will now try to keep the Earth's temperature from rising too much. And we will also try to reduce the greenhouse gases emission. So that is what they promised in this particular agreement, right? And India was also part of this agreement. But students, the challenge is how do we make sure that everyone actually reduces emission, है ना? अब सबने प्रॉमिस तो कर दिया है, लेकिन गारंटी क्या है कि सब एक्चुअली एमिशन को रिड्यूस करेंगे? हाउ डू वी चेक हु इज डूइंग बेटर? कैसे चेक करेंगे किस कंट्री को एक्चुअल में हेल्प की जरूरत है? तो यहीं से आइडिया आया कार्बन मार्केट का। कार्बन मार्केट, carbon market. Now, what is carbon market? Imagine your class is asked to plant 100 trees. 100 trees. Okay? अगर आपकी क्लास को बोला गया कि आप 100 trees आप अपने स्कूल प्रेमिसेस में उगाओगे. So some students they plant extra trees while others they can't meet the target. So the students who planted extra can give their extra effort to those who couldn't. Okay? और मतलब एक्सचेंज में कुछ जो एक्स्ट्रा जो प्लांट्स उगाए हुए हैं तो उसका क्रेडिट वो उन स्टूडेंट्स को दे देंगे जिन्होंने नहीं कर पाया, जिन्होंने अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया. तो कार्बन मार्केट भी इसी तरह ही है. कंपनीज और कंट्रीज क्या करते हैं? वो अपने एमिशन को रिड्यूस करते हैं. ओके, तो जो कंपनीज और कंट्रीज दैट रिड्यूस एमिशंस मोर देन देयर टारगेट दे अर्न credit. They earn credit. Okay, and those who can't meet their target, they can buy these credits. So this helps everyone move towards reducing emissions together. Now, under the Paris Agreement, there's a section called Article 6. Article 6. This section explains how carbon markets should work globally. Okay, so countries discussed this for years because it's a bit tricky to make fair rules. So finally, at a big climate conference in 2024, Baku, Azerbaijan, have conducted in November 2024. यहाँ पे सबने अग्री किया. क्या अग्री किया? इंडिया, देखो इंडिया ने भी अग्री किया कि वो इस रूल को फॉलो करेंगे. एंड दैट इज वाई they decided that they will create national designated authority. Okay, now what is this NDA? Students, it's like a referee in a game. It checks which projects in India can earn reduction credits. Okay, किस कहाँ पर रिडक्शन क्रेडिट कोई कौन सा प्रोजेक्ट अर्न कर सकता है. It approves and authorizes them. It makes sure that all projects follow India's environmental goals. And it keeps track of how we meet our daily target, how we meet our targets. कौन से targets? Nationally determined contribution.
ओके, तो एनडीए क्या है? एनडीए एक अथॉरिटी है। एनडीए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या चेक करेगा कि हम अपने जो टारगेट्स हैं उसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। कौन से टारगेट्स? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या कह रहा है कि वी विल बेसिकली कट आर एमिशंस पर यूनिट। दीज आर द टारगेट्स कि हम अपने एमिशन को 45% बाय 2030 कर देंगे। हाफ ऑफ आर इलेक्ट्रिसिटी विल कम फ्रॉम क्लीन नॉन फॉसिल फ्यूल sources by 2030. We will also plant trees. So see, there are certain targets set by India and NDCs, and NDA will check whether we are able to achieve these targets or not. Now, why does this matter to us? Because this is our future. Cleaner energy, less pollution, more greenery, all these things, it will ultimately, it will make our lives better, na? Okay, so that is the role of national designated authority. Now students, let's go to the next article of the day. So this news is about Adi Karam Yogi Yojana initiative. Now, have you ever visited a tribal village, or have you ever seen it in documentaries? You might have, right? So tribal communities, they often live in forest or in remote areas, basically close to nature. नेचर के पास रहते हैं और थोड़ा रिमोट एरिया में, विलेजेस में रहते हैं, बट दे समटाइम्स मिस आउट ऑन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ पुअर कनेक्टिविटी। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट स्कीम जो लेकर आते हैं उनके लिए कई बार उनको पता ही नहीं चलता है। उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने ये न्यू स्कीम लेकर आए हैं। अवेयरनेस नहीं होता है, मोटिवेशन गैप्स होते हैं, एंड ऑल्सो देयर इज पुअर कनेक्टिविटी। So, Ministry of Tribal Affairs thought that instead of sending officials from cities to teach them, why not train people from their own villages to become leaders? Right? Great idea. And that's how the Adi Karam Yogi initiative was born. So, under this program, uh, government, what will government do? Government wants to create 20 lakh, 20 lakh change leaders. Change leaders. These are basically village level volunteers, teachers, officials who will solve their problems and motivate others. Right? ये जो क्या करेंगे, ये जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, स्कीम्स के बारे में बताना है, उसमें लोगों को अवेयरनेस फैलाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे। अब इनकी ट्रेनिंग कैसे होगी? Is it only boring lectures? No, it's actually really creative and fun. So they use lighting the candle exercises where participants learn not to complain about darkness but to bring light. So it's about taking initiative. And there's also fish bowl exercise. आप इसमें देख सकते हो, जैसे participants imagine themselves as fish in a bowl and they get to know each other deeply. So the idea is to make people think creatively. Okay, they basically make people to take responsibility and work together. And there's also a concept uh, under this scheme. It's called Village Vision 2030. So every village will prepare its own vision document. What is vision document? Like setting certain goals, like what do we want our village to look like by 2030? What are our goals for education, for health, right? Water, jobs. So these visions will be displayed as public murals. Murals क्या होते हैं? आपने देखा होगा ना, पेंटिंग्स होते हैं वॉल पे, so that everyone can see and follow the plan. And this program will also be set up. It will also set up uh, Adi Seva Kendra. Adi Seva Kendra, which will act as a one stop help
सेंटर फॉर विलेजर्स, जहाँ पे वो सारी जितनी भी स्कीम्स है जिनके बारे में उन्हें नहीं पता चलता, वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो आदि सेवा केंद्र में जो ट्राइबल लोग हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? सो this program, it actually teaches us an important lesson that real change happens when the community itself leads the way, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है। 240 स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स आर देयर, 15,000 ब्लॉक लेवल ट्रेनर्स आर बीइंग ट्रेन्ड। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। यहाँ पे इस विजन के अंडर बहुत अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है, राइट? सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट आदि करम योगी इनिशिएटिव, जहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं उनको, उनमें ही वॉलेंटियर्स, टीचर्स, ऑफिशियल्स, उनमें ही जो है उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैला सके, राइट? So students, that will be all for today. Thank you for listening, and in our next episode we will bring you more stories that connect the world of news with your world. Until then students, stay curious, ask questions, and always look for ways to make the world better. Bye bye.